लिंक्डइन के थ्रू नेटवर्किंग कैसे करें, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स एंड यंग प्रोफेशनल्स। आज के वीडियो में मैं कुछ बहुत ही एक्शनेबल स्टेप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। आई एम एन IIT दिल्ली एंड ISB हैदराबाद ग्रेड एंड इस चैनल पे मैं अपने करियर एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ फ्रॉम द लास्ट 10 years। आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ एजुकेशनल वीडियोज़। सो इफ़ एनी ऑफ दोज थिंग्स इंटरेस्ट यू, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आज के वीडियो में हम प्योरली लिंक्डइन के थ्रू नेटवर्किंग कैसे करें एंड उस नेटवर्क के थ्रू जॉब्स कैसे ढूंढे या कुछ किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए हो वो कैसे आपको मिल पाए, यही सब डिस्कस करेंगे। नाउ थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ तो ऑन अ monthly basis I receive at least 150 to 200 LinkedIn DMs, which means about 5 to 7 DMs every day, and more than 50% of them are always asking for job referrals or some kind of help, you know। उनमें से सिर्फ 10 से 15% मैसेजेस का ही मैं रिप्लाई करती हूँ। मैं प्राइसी होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द मैसेजेस आर नॉट स्पेसिफिक एंड मुझे ऑनेस्टली नहीं पता मैं उनका रिप्लाई क्या करूँ, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई डोंट एंड अप रिस्पॉन्डिंग। तो मैंने अपने सारे DMs को एनालाइज किया। मैंने ये भी देखा कि मेरे लिए इन द पास्ट व्हाट काइंड ऑफ cold emails or DMs have worked, have generated me good response rate, and उसके बेसिस पे मैं इस वीडियो में आपके साथ 7 actionable tips शेयर करने वाली हूँ। Towards the end, I'm also going to share some examples where cold DMs and LinkedIn DMs have really worked well for me, and where I have also replied back to some people, and I would like to believe that that has helped them out as well. Tip number 1. Don't just say a hi or a hello or a how are you. You are just wasting real estate that way. And ऐसे सोचो कि तुम किसी stranger को approach कर रहे हो, वो भी online. Why would someone reply back to your hi or hello? Like, your message needs to be a little more meaty than that. LinkedIn is a place for professionals, and mostly they are busy in their own lives. So instead of sending a hi or a hello, if you send a small introduction or more context-based DM, then it is much more meaningful and it can help grab attention to your message. Tip number 2 is to address people by their names. अच्छा, बहुत सारे DMs ना ऐसे भी होते हैं जिसमें लिखा होता है Dear LinkedIn member या Hi, and then there's a very standardized template kind of a message. वो पढ़ के ही समझ आ जाता है यार कि वो spam है। Spam in the sense maybe the sender has copied and pasted that specific message to 15 other people as well. Obviously spam का reply करना किसी को पसंद नहीं है। So instead कस्टमाइज योर मैसेज थोड़ा बहुत, सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि तुमने जिसको DM भेजा है, द DM इज़ मेंट फॉर दैट पर्सन स्पेसिफिकली, एंड ऑल्सो इंक्लूड द नेम। मैम, सर इज़ ओके, बट नेम इज़ गुड इनफ यूजुअली ऑन लिंक्डइन। डोंट आस्क फॉर हेल्प इन द फर्स्ट DM इटसेल्फ। इट्स अ बिग नो नो एंड अ बिग टर्न ऑफ। मुझे 80% ऑफ द मैसेजेस हमेशा इसी टेम्पलेट के आते हैं कि हे, आई सॉ योर वीडियो, इट वॉज रियली गुड, कैन यू हेल्प मी डू XYZ। In this kind of a situation, you may or may not get a reply, but the chances are definitely going to be much lower, because if someone doesn't know you, they're not going to be jumping out to help you out with your problems, right? And if you're writing with the intention of cold emailing, then it's absolutely fine. तुमने मान लो 100 मैसेजेस भेजे, उसका आपको 5 से 10% ही रिस्पॉन्स मिलेगा, and that 5 से 10% is enough for a cold email when you are asking for something. But if you are trying to build a long-term connection with that person, if you really like that person's profile and want to actually build a network, then तो definitely first DM में help मत मांगो. So what can you do instead? And here is tip number 4 for you. Introduce yourself. पहले DM में you can use that space to introduce yourself or to let the person know why you want to connect with that person. Maybe something in that person's profile resonated with you. So let that person know. रिप्लाई में यूजुअली थैंक यू या कुछ ऐसा सा मिलेगा। देन यू कैन कीप फॉलोइंग दैट पर्सन्स जर्नी ऑन लिंक्डइन। उनका कोई कमेंट पसंद आया तो उसमें
कमेंट करके उन्हें बताओ या उस टाइम पे डीएम करके बताओ दैट दिस थिंग रियली रेजोनेटेड विद मी, एंड दैट इज हाउ यू ऑर्गेनिकली बिल्ड अ नेटवर्क. मे बी 6 महीने डाउन द लाइन, इफ यू रियली नीड सम हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन एंड नाउ यू रीच आउट टू दिस पर्सन विल बी मच मोर ओपन to helping you out in whatever you need. Tip number 5. If you are indeed using LinkedIn DMs to cold email, then again there are a few things that you need to keep in mind. अगर पहले DM में किसी हेल्प के लिए भेजना है, कुछ हेल्प चाहिए, आस्क नाइसली यार. मेरे को मतलब ऐसे बहुत सारे DMs आते हैं जिसमें पता नहीं सेंडर को ऐसा लगता है कि दे फील एंटाइटल्ड टू माई अटेंशन और माई टाइम टूवर्ड्स देयर प्रोफाइल और व्हाटएवर. मुझे एक बहुत ही रीसेंट किस्सा याद है जिसमें मुझे किसी ने बोला कि प्लीज़ रिव्यू माई लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड उसके 2 दिन बाद उसका मैसेज आता है, डिड यू रिव्यू माई लिंक्डइन प्रोफाइल येट? आई मीन इतना एंटाइटलमेंट क्यों है तुमको? मैंने ना तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल देखूंगी, ना मैं लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू करती हूँ किसी के भी. एंड लास्टली यू आर नॉट इवन बीइंग वेरी स्पेसिफिक इन योर डीएम की प्रोफाइल में क्या रिव्यू करना है. तो मैं किस हिसाब से, even if I want to help you, I won't be able to help you out. Instead, there are better ways to ask. Like, you can request for that person's time. You can say, if you get a chance, I would love to get your thoughts on my profile. Or, if you are comfortable, I would like to get on a call to understand more about your experience. And when you put it that way, choice जो है ना वो रीडर के हाथ में आ जाता है, एंड दैट इज ऑलवेज वेरी एम्पावरिंग, एंड दैट इज व्हेन यू आर मोर लाइकली टू गेट अ रिस्पॉन्स. सो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी टाइप की चीज़ है. टिप नंबर 6. Again, if you are cold emailing and asking for a person's help, this is especially if you are asking for a person's time for something, you know, जैसे कि कोई essay review हो गया, या if you want to get on a call with that person. In this kind of a situation, you need to be extra careful. थोड़ा extra nice होना पड़ेगा to get that person's attention. You can say things like, if you are comfortable, then I would like to get on a call, or if you can manage to take some time out of your schedule, I would like to get on a call, or else I am happy to continue my conversation in the DMs itself. So that is number 1 कि choice हमेशा reader के हाथ में दो. And secondly, even if the person agrees to go on a call with you, share as much context as possible in the DM itself. पूरे details दो, be very specific of what help you need from that person, so that it gives the other person an idea whether they can help you in the first place or not. मैं अब कई बार मुझे भी ऐसे DMs आते हैं जिसमें कुछ हेल्प ऐसी होती है, बहुत डिटेल्ड होती है, और देख के मुझे पता चल जाता है यार इसका तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है. जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में अगर किसी ने मेरे से पूछा, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट आफ्टर टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स हु हैव बीन इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड, बट आई डोंट हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, सो आई कांट एंटरटेन प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉल्स विद एनीवन. सेकेंडली, ऑलवेज आस्क. बस बेशर्मों की तरह उनका व्हाट्सएप नंबर मत पूछो. आस्क द पर्सन व्हाट ही और शी इज़ कंफर्टेबल विद, इफ इट्स अ जूम कॉल और इफ इट्स अ व्हाट्सएप कॉल और इफ इट्स एन ईमेल. And if the person is sharing their WhatsApp number with you, then please return में अपना भी WhatsApp number share करो. Don't expect that person to reach out to you on WhatsApp. You should be the one reaching out because you are the one who needs help, right? Lastly, इस situation में ये बहुत important है कि you always set up a time. पहले से एक time decide कर लो कि कब बात करनी है, and don't miss that deadline if possible. It's really like मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है that the other person needs some help from me. They have set up a time with me and मैं वेट कर रही हूँ उस टाइम पे उस कॉल का. 1 मिनट पहले या मे बी 5 मिनट बाद टाइम के मैसेज आता है, oh I'm so sorry I forgot. It's so unprofessional, right? अगर तुम्हें किसी से हेल्प चाहिए, make it easy for them to help you. By any chance, obviously shit happens, by any chance if that time doesn't work for you anymore, at least a few hours in advance let that person know that hey, I'll be busy during this time, I'm so sorry, I'll have to reschedule, give me another slot that possibly works for you. Last tip, and this is probably the most important one, is be very 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 specific in your DM. अगर if you need help from someone, then be very specific कि exactly कहाँ पे help चाहिए. Review my profile is not being specific. Here is my resume, give me a referral is not being specific. Is my profile suitable for MBA is not being specific. Okay, you need to be
much more specific than that. Help the other person help you. You need to show the other person that you have also done your research, कि तुम्हें एक बहुत ही specific सी चीज़ पे doubt है, and that is when you will have a much better chance of a response. Also to be specific, you know, you need a lot of words. कई बार DM में इतना सब fit नहीं आता है, तो you can also, it's okay to ask that person, do you mind if I reach out to you over email with a question that I have? And if that person is okay, then he'll let you know that, you know, yeah, here is my email ID, feel free to reach out to me. Those were the 7 tips, and now sharing some examples from my real life that have worked from me. Example number 1 उसका है जब मैंने कोल्ड ईमेल किया हो किसी को एंड दैट हैज़ वर्क. ऑनेस्टली मैं जॉब रेफरेंस के लिए डायरेक्टली ज़्यादा रीच आउट नहीं करती हूँ लोगों को, बिकॉज रिस्पॉन्स रेट काफ़ी कम होता है. Rather, I have reached out a lot of times to know about people's experiences. Especially when I'm interviewing with a company, what I'll do is I'll try to shortlist people जो मेरे को हेल्प कर सकते हैं to let me know a little bit more about the company culture, कंपनी का you know internally काम कैसे होता है वहाँ पे etc. And 2 things I would usually keep in mind. Number 1 is मैं उन्हीं लोगों को शॉर्टलिस्ट करती हूँ जो मेरे नेटवर्क में है. जैसे कि मान लो मैं फेसबुक में इंटरव्यू कर रही हूँ, I'll go to my search list, I'll filter out all the people who are my first connections or my second connections, and फिर उसमें से मैं थोड़ा बहुत फिल्टर करती हूँ. जैसे मेरा नेटवर्क अगर होगा तो IIT का होगा, IIM का होगा, ISB का होगा. सो उन कॉलेजेस में जो लोग हैं उनको मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ सबसे पहले. I'll make an Excel and then I usually reach out to a lot of them. बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होके कि मुझे कहाँ हेल्प चाहिए. First I always start with a bit of introduction that hey, I am so and so. The reason I'm reaching out to you is I see that, for example, you have been working for 4 years at Facebook. I am in my late stages, late interview stages with Facebook already. So I was hoping to get in touch with you and get some information, know about the company culture a little bit, etc. If you are open to it, please let me know a convenient time. Or if it's okay for me to ask some questions over here on DM itself. इस तरह की situations में मुझे 70 to 80% response rate मिला है. Because of these 2 reasons, I was specific and I was shortlisting people who I knew would probably reply back to me because they're from my network. Second example, when people have reached out to me and I have responded back. Number 1 जो मुझे ध्यान आता है कि when people ask me questions or ask me to ask their questions on DM itself, written में, I have a much higher tendency to reply back rather than when they ask me to get on a call. Because for me थोड़ा सा different भी है क्योंकि मैं content create करती हूँ YouTube में, तो मुझे बहुत सारे DMs भी आते हैं. बट पहले जब मुझे कम DMs आते थे तब मैं कुछ लोगों के साथ कॉल पे चली भी जाती थी. अब तो मेरे पास बिल्कुल बैंडविड्थ नहीं है कि कॉल पे जाऊँ मैं लोगों के साथ. बट इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, राइट? देयर कुड बी सम पीपल हु वुड प्रेफर टू गो ऑन अ कॉल. वो ज़्यादा टाइप करना पसंद नहीं करते हैं, तो उनसे पूछ लो कि उनके लिए क्या बेटर काम करता है. For me, asking anything on DMs works very well. I have helped people with their interviews at some of the companies where I have worked at and where I have interviewed other people. I have helped people with their essay evaluations. And honestly, I reply back to people who are very very specific. जैसे मुझे एक example याद आ रहा है. बहुत सारे लोग just भेज देते हैं कि you know मेरा profile देख के बता दो कि if it is suitable for MBA or not. Imagine you are asking me to literally go to their profile, go through their LinkedIn resume, or maybe they have sent me their resume, read through it, and then get back to them with feedback. Why will I do so much work for someone I don't know? Rather, एक बंदे ने एक बार मुझसे पूछा था कि hey, this is a brief about my profile. I feel like I have really good leadership skills, but ABC इस space में मैं थोड़ा improve कर सकता हूँ. So can you give me some pointers how I can do that? That's quite specific, and तब मेरे पास काफ़ी कुछ था share करने के लिए, and I typed it out for him very clearly. Second type of situations जब ज़्यादा मैं लोगों को reply करती हूँ is when you know if firstly of course if you are within my network then of course I have a higher tendency to respond back. But job referral के लिए जब लोग आते हैं, a lot of times people will be like, this is my resume, this is the set of skill sets that I have, and these are the 3 job profiles that really caught my eye on XYZ company. Can you help refer me to these? इस तरह का अगर बहुत specifically आपने कुछ लिखा हुआ है, only then I would reply back
otherwise I won't. Okay, so with that we are at the end of the video. Hopefully इस वीडियो में आपको पता चला हो कि नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है लिंक्डइन में. इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट जस्ट सेंडिंग अ हाई और अ हेलो, बट इट टेक्स टाइम. एंड ऑफ कोर्स जब आप अनजान लोगों को रीच आउट कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, रिस्पॉन्स रेट कम होगा, बट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट अगर 5 से 10% भी रिस्पॉन्स रेट है तो काफ़ी है. आपको एट द एंड ऑफ द डे ओनली 1 लीड इज़ वॉट यू नीड. सो होप दिस video was helpful for you guys. If it was, then hit the like button and please subscribe to the channel. And yeah, I'm going to see you in the next one. Till then, bye.